इसके अलावा कोई ऑप्शन, और उसके साथ उसको रोमैटिक हार्ट डिजीज भी है। रोमैटिक हार्ट डिजीज के लिए है मेडिसिन। पेशेंट को हमारे पास एडवाइस किया है क्योंकि टीबीडी है, टीबीडी में भी 95% है तीनों आर्टरीज में, तो उसके लिए पेशेंट इतना सीरियस केस है वो पहले समझो उसकी सीवियरिटी। This is a case of 47 years old patient who is a teacher by profession. Is tall, healthy person with long beard on chin and hat bowl, Muslim cap on his head. When he entered in the consulting room, he was short of breath and looking very tired. TBD भी है, जब उसके साथ हमारी हार्ट डिजीज भी है, तो सोचो उसको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग कितनी होती होगी। When I asked him question, he was unable to talk because of breathlessness. His son narrated that he is suffering from mitral valve stenosis since 16 years. But recently, in month of April 2019, he started getting shortness of breath with dry cough. अभी उसको कफ भी है। We hospitalized him in a renowned hospital where they did 2D echo and angiography, in which there was a blockage of 3 main vessels of heart along with reduced mitral valve area up to 0.9 cm per square and severe pulmonary hypertension. So they suggested to do valve replacement and CABG, that too within 4 days. His case in details as follows. माइट्रल वाल्व जो एरिया होता है कितना होता है नॉर्मली? 2 है क्या? फिर माइट्रल वाल्व कोलैप्स है, ये सब आपको कैसे समझेगा स्टेनोसिस? कार्डियोग्राफी में वाल्व का जो है वो देखा है कभी? उससे भी पता चलता है वाल्व एरिया कितना है। उसका जो एरिया होता है 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर तक नॉर्मल होता है। अगर 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ये सब स्टार्ट होते हैं, और कभी भी चांसेस है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह किसमें भी पेशेंट ट्रांसफर हो सकता है। और ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है जब वो 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से भी नीचे होगी। हमारे पास पेशेंट आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तक होते हैं, फिर भी कभी भी उनको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है माइट्रल वाल्व एरिया की, तो वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कार्डियोग्राफी करते हैं उसमें देखो उसमें वाल्व का एरिया दिया है, माइट्रल वाल्व का एओर्टिक वाल्व का दोनों का दिया है। तो इस पेशेंट का 0.9 है, इसकी वजह से इसको ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा था। इवन वो वॉशरूम के लिए जाने के लिए भी उनको नहीं हो रहा था, तो सर ने उनको उसके लिए भी बोला था कि आप बेड टाइम यूज़ करो, इतना सीवियर ब्रेथलेसनेस था उनको। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या है? इज अ कंडीशन इन विच हार्ट वाल्व हैव बीन परमानेंटली डैमेज्ड बाय रूमेटिक फीवर caused by streptococcal infection, and immune response causes an inflammatory condition in the body which can result in ongoing valve damage, जिसकी वजह से valve damage हुई है, and this inflammatory process can affect many connective tissues, especially in heart, joints, skin and brain. That's why it's a serious condition, rheumatic heart disease. The heart valve becomes scarred over the period, leading to narrowing and leaking of the heart valve, making it harder for the heart to function normally. जब वो इतना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो नैरोनेस इतना वो ये होता है, इसकी वजह से ये सब कंप्लेंट्स है, and finally result into heart failure. Mostly mitral valve is affected. The common symptoms are weakness, painful swollen joints, shortness of breath, chest discomfort, edema. If mitral valve area is less than 1 centimeter per square, then replacement for repair of mitral valve is advised. ये नैरो एरिया होने के बाद पेशेंट को ब्रेथलेसनेस एंड ऑल कंप्लेंट इतने सीरियस होने पड़ते हैं कि वाल्व रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है एलोपैथी में। Complication of heart disease include heart failure, bacterial endocarditis, ruptured heart valve, complication of pregnancy and delivery due to heart damage. उस पेशेंट को डिलीवरी, प्रेगनेंसी ये सब में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। Now
ट्रिपल वेसल डिजीज, इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज के साथ टीबीडी भी था। टीबीडी में क्या होता है? इट इज एन इस्केमिक हार्ट डिजीज वेयर देयर इज रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल ड्यू टू build-up of plaque in arteries of the heart. It is the most common cardiovascular disease which result in angina, myocardial infarction, and sudden cardiac death. Symptoms include shortness of breath, chest pain due to exertion and emotional stress. The cause of blood flow obstruction is atherosclerosis of the arteries of the heart. And ये किसकी वजह से होता है? Mostly high blood pressure, high cholesterol, smoking, diabetes, lack of exercise, obesity. ये सब इसके रीजंस हैं। If proper dietary changes, medications are taken, then it leads to heart attack followed by heart failure over the period of time, or abnormal heartbeat like ventricular arrhythmia, and eventually death may occur. Revascularization of acute coronary syndrome is done with angioplasty or coronary stenting. If more than one coronaries are blocked, then coronary artery bypass grafting is advised. इस पेशेंट को भी इसके लिए बाईपास सजेस्ट हुआ। अभी आपके पास ये पेशेंट आया है, आप क्या करने वाले हो? केस ठीक से लिखो। Hypertension since 18 years, triple vessel disease, diagnosed in April 2019. Rheumatic heart disease with severe mitral stenosis. इसके साथ इसको अभी कफ था जिसमें माइल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी है उसको। Investigation. LAD 40% lesion and 70 to 80% lesion, LCX में 95% है, and 100% total occlusion. Triple vessel disease की वजह से all three heart major vessels are blocked, and सब में 90-70 ऐसे ही है। Rico, rheumatic heart disease with moderate to severe mitral stenosis, grade 1 mitral regurgitation, good biventricular systolic function, mild pulmonary hypertension. Complaint. जैसे मैंने बताया, पेशेंट को हिस्ट्री नहीं दे पा रहा था, उसके जो लड़के हैं उन्होंने ही ज़्यादातर हिस्ट्री दी है, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, फिर भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री उन्होंने जो बताया, बेटे ने जो बताया वो ये है। डिस्निया 17 years से है, इंक्रीज since 2 weeks, pressurized feeling in left side of chest even while walking. तो वॉशरूम को जाने को भी उनको ब्रेथलेसनेस सीवियर फील हो रहा था कि थोड़ा सा भी वो एक्सर्शन सहन नहीं हो रहा था। Activation walking, ascending, talking, weightlifting, winter, cold after, cloudy weather, lying down. Better by sitting with support and black tea. Recurring cold and cough since 22 years. इसकी इम्यूनिटी कितनी लो है? 22 years से है इसको ये कंप्लेंट। और मोस्टली माइट्रल वाल्व के पेशेंट को हमेशा उनकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से बार बार उनको चेस्ट इन्फेक्शन होते रहता है। So coryza, which used to descend down in the lung with whitish thick expectorations, aggravation, cold air, cold thing, getting wet, better by hot steam, feverish feeling during cough,
generalized weakness since 20 days because of frequent urination due to change in diuretic medications. इस पेशेंट को डाययूरेटिक पे भी रखा गया था ये सब कंप्लेन होने के बाद, इडिमा भी था उनको, तो दैट्स व्हाई डाययूरेटिक की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन उसका साइड इफेक्ट. देन अनरिफ्रेशिंग फीलिंग, नींद भी ठीक से नहीं होती थी. वांट टू सिट और स्लीप एनी टाइम. फटीग फीलिंग एंड इस सबके साथ इरिटेबिलिटी मार्क थी. Aggravation, empty stomach, better by eating after, better by eating fruits after. Then bilateral leg pain, weakness के साथ कमजोरी भी थी उनको, तो उसमें leg pain था मार्क. Since 10 years, onset gradual, decline gradual, especially in calf muscles. Throbbing type of pain. Aggravation, prolonged walking, prolonged standing. Better by heart pressure, holding legs and elevation of legs. Past history. Diagnosed with RHD with mitral stenosis 17 years back. Took penicillin injection for 21 days. इसके लिए उन्होंने ये लिया था. Then history of malaria 11 years back. History of pneumonia 3 years back. And scabies 5 years of age. Family history. Mother hypertension expired, father skin disease expired, sister query osteoarthritis. Physical generals, habit nothing. ये पेशेंट को TBD है, उसकी हैबिट कुछ नहीं है. Diet mix, appetite normal, can't tolerate hunger. Desire non-veg, chicken 3+, sweet 3+. Oily food. Average and spicy. Food aggravation, ulcers and oily food causes hyperchlorhydria, acidity होती है. Headache with coryza, frontotemporal region में है, better by tight bandage and pressure. Eye specs in 7 to 8 years, hypermetropia. Mouth, tongue moist, thirst, small quantity, small interval. Throat, sore throat since 8 to 10 days. Stomach, hyperchlorhydria with headache. Burning in retrosternal region, vomiting sometimes, yellowish watery vomitus, aggravation pulses, better by induced vomiting and vomiting after. Bowel 2 times in morning, per day in morning, and bladder no complaint. Perspiration on face, neck, chest. Heart condition है, कोल्ड स्वेट ही रहेगा इनको. Offensive perspiration. Sleep 10 to 6 night time. Unrefreshing. Sleep disturbed due to breathlessness at night. Alert sleep, lying on back, soft bed and pillow required, covering required, and snoring.
actually mine. पेशेंट की ज़्यादातर हिस्ट्री उसके बेटे ने ही दी है, उनको ब्रेथलेसनेस होने की वजह से। कुछ सिम्टम्स पेशेंट ने ऐड किए हैं उसमें। एजुकेशन, B.Ed, MA, ऑक्यूपेशन टीचर, हायर प्राइमरी, चाइल्डहुड इन विलेज, married since 26 years. How was your childhood? We were only 4 people in our family with poor financial condition. Still, I was very pampered by my parents. Especially, I was close with my mother. How was your nature? I am very calm and quiet by nature. I was much engrossed in my studies and was topper in the class. I had very few friends. Do you have any fear in childhood? I had fear of dark and stage. How is your married life? This time I saw that patient becomes somewhat uncomfortable, so I sent her wife outside the consulting room. Then after a long pause, he told me that he had love relation with the girl from other caste since school age. But he could not marry her because of caste problem. Her brother had quarreled with him because of it. I was in deep grief. Sometimes suicidal thoughts come, and till now things about this matter. Then I got married to a girl of my parents' choice. I used to beat her unnecessarily in initial years. How is his nature? Asked to wife. Wife को पूछा गया उनका nature के बारे में. Then he is quiet by nature, but he wants things immediately when he asks. Otherwise, he shouts on me. He is less talkative and interested in doing namaz daily, reading books and going to school. Otherwise, he doesn't like any other things. He weeps when he sees someone in grief. What is a hurting incident in your life? I got transferred to other place, but I didn't took my parents along with me. My father expired 10 years back and could not do anything for him. I think about it very much. Accidentally, I met her, that ex-girlfriend, when we used to talk on the phone, but we didn't had any bad intentions. But still, her husband doubted on us. That time, I had violent anger on him. How is his mind state since disease? He has become very irritable and lazy now since illness. So, this is a case